So in the previous class, we were studying about acids, we were studying about bases, and if you remember, in their properties, there was a reaction which was known as a neutralization reaction. In that reaction, if you remember, or if you have read in the previous lectures, you will remember that if acid and base will react together, they will be giving us two things. One was water and the other one was salt. So this was the extremely important reaction which has been listed in which has been listed three times in this chapter. One was in the acid section, one in the base section, and now in the salt section, right? We studied neutralization reactions three times. Acid plus base react with each other like this, and it will be giving us, this reaction will be giving us water plus salt. All right. A salt is basically a compound which is formed by the neutralization of an acid with a base. A large variety of compounds exist as salts. Sodium chloride is a common salt which can be used in our food. So salt तो अब हम सब इस word से familiar है. It is a white crystalline compound, sodium chloride. ठीक है, it is being used in our homes on daily basis. हम इसको daily use करते हैं, हम daily नमक का use करते हैं, और ये एक बेहतरीन example है right now to have. So there are some other common salts. Certain salts have been given, such as sodium chloride, potassium chloride, ammonium chloride, calcium chloride, sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate. These are basically the examples of baking soda and baking powder. Then we have sodium nitrate, potassium nitrate, ammonium nitrate, calcium sulfate, calcium carbonate, and calcium and copper sulfate. Copper sulfate is again of big use in our laboratories. आमतौर पर copper sulfate बनाया जाता है, or if by chance, if by any chance we are going towards the school in the next in September, then we will be making copper sulfate crystals in the laboratory. All right, these are basically the very blue pretty crystals, but they are very poisonous. All right. So we are moving towards the other slide in which properties of salts have been listed. Right, there are 6 properties in this slide, as you can see. Salts are basically present in the solid state. We are taking the example of sodium chloride. For example, they are found in the crystalline or the powder forms, and they have high melting and boiling points. अगर आप salt को चूल्हे पे heat करते हो, ठीक है, अगर आप salt को चूल्हे पे heat करते हो, सिर्फ salt को, ठीक है, तो salt बहुत देर बाद जाके melt होता है. They have very high melting and boiling point. Just take the example of the usual example, the example of a salt which we are using in daily life. If we are heating salt, ठीक है, on a stove in a pan, then it will take very long time. It will take very much heat, right, to melt. All right, they are generally soluble in water. इनको पानी में हल किया जा सकता है, but there are certain other salts which are not, पानी में basically water is basically a universal solvent. ठीक है, पानी में बहुत सी चीजें जो हैं as compared to any other liquid dissolve हो जाती हैं, right? But there are certain salts, like these are the important examples, like calcium carbonate, underline them, like calcium carbonate, lead chloride, and cadmium sulfate. They are not soluble in water, rather they are insoluble in water, और ये पानी में dissolve नहीं होते, ये पानी में हल नहीं होते. Underline the second point. Okay, their aqueous solutions of metal salts or their molten forms conduct electricity. जब इनको पानी में हल किया जाता है या किसी अदर लिक्विड में, तो इनके जो सॉल्ट्स होते हैं ये डिकम्पोज हो जाता है आयंस में, ठीक है. जब ये आयंस में डिकम्पोज होगा तो इवेंचुअली इट विल बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इट विल बी हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है. And many of the salts contain water molecules in their crystals that are responsible for the shape of the crystal. The best example which we will be studying in the exercise as well is of
Copper sulfate. Copper sulfate has very beautiful crystals, and the shape of the crystal is due to the presence of water molecule which has been chemically joined with, attached with rather, the molecule. Copper sulfate is attached with 5 molecules of water, which is giving it a very beautiful and pretty shape. So carbonates and bicarbonates react with acids to liberate carbon dioxide gas. See, sodium carbonate, an example has been given of sodium carbonate. It will be reacting with acids, and we are getting sodium chloride plus water and plus carbon dioxide. All right, carbonates and bicarbonates react with acid. See the example, point number 5. Sodium carbonate is present in the solid state. HCl is present. HCl is a very strong acid. It is present in the aqueous state. It will be reacting together, and at the end of the reaction we will be giving sodium chloride in water plus with the liberation of carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas will be evolved. This is an important reaction, kindly mark it. Now we are moving towards point number 6. When salts of heavy metals, the term heavy metal refers to any metallic chemical element that has very high density. It is very heavy, and it is very toxic, and it is also poisonous at low concentrations. When salts of heavy metals react with bases or alkalis, precipitates of heavy metal and their hydroxides are formed in reaction mixture. Precipitates are the substances that appear as solid, insoluble product in the liquid reaction mixture. Underline point number 6, this line. Precipitates are the substances which appear as solid, insoluble product in the liquid reaction mixture. Best example we can take of precipitates is if you take yogurt, right? और अगर आप एक ग्लास में पानी लेते हो, ठीक है, विदाउट मिक्सिंग, आप एक ग्लास में पानी लेते हो, पानी के ऊपर आप योगर्ट डालते हो, ठीक है, विदाउट मिक्सिंग, जो ऊपर चीज होती है वो बेसिकली कर्ड से बन जाते हैं, या उसको हम लेबोरेटरी में अगर इस तरह के उसकी अपीयरेंस बिल्कुल प्रेसिपिटेट्स की अपीयरेंस की तरह होती है, दे आर बेसिकली अ वेरी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट व्हिच इज नॉट एबल टू डिसॉल्व इटसेल्फ इनटू द लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है. So another example has been given of ferric chloride and then sodium hydroxide, ठीक है. This is basically the heavy when salts of heavy metals react with alkalis, right? This is the heavy metal salt. This will be reacting with basic solution, aqueous solution of a base, and it will be giving us the heavy metal hydroxide. Iron here is a heavy metal, and इसको आप प्लीज नोट कर लें, आयरन इज अ हैवी मेटल. Iron is a heavy metal, and it will be reacting with sodium hydroxide in the aqueous form, and it will be giving us the precipitates. Look at this word, the precipitates. कर्ड से बन जाते हैं, थोड़ा सा insoluble सा प्रोडक्ट नजर आता है iron hydroxide का, or it is also known as ferric hydroxide, and along with the formation of sodium chloride. The property number 7 is basically the chemical reaction of water with a salt produces an acid and a base, and the reaction is called hydrolysis. This is a very important reaction, and you will be studying it in future again and again. So kindly underline this as well. It's basically a reaction between sodium carbonate and water, and it will be giving us sodium hydroxide and carbonic acid. Look at over here. Sodium carbonate will be reacting with water, and it will be giving us a base as well as an acid. This thing is known as hydrolysis. The word is derived from the hydro means water, lysis means breakdown. ठीक है, जब water की breakdown होती है तो this process is known as hydrolysis. और ये जो equation दी गई है, this is the best example of hydrolysis. Sodium carbonate will be reacting with water. Hydrolysis हुई, breaking down of water हुआ, and at the end we are getting sodium hydroxide and carbonic acid.
So this is basically, if you see, ये precipitates होते हैं, ठीक है. ये जो insolubles है, ये पूरी आप टेस्ट ट्यूब भी देख लें, इस पूरे के अंदर जो insoluble product है इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है ऊपर की तरफ. This is known as precipitates. All right. So now we are moving towards uses of salts. So uses of salts, we will be looking at the uses in our human body, in our industries. All right. So first use of salt is, wait a second. All right. Sodium and potassium salts are needed for the proper functioning of muscles and the nervous system. Sodium is an essential nutrient for acid-base balance in the human body. It is very much important for the transmission of nerve impulses and for the normal function of the cell. Okay? There are certain sodium and potassium pumps which you will be studying in the future in 9 or 10 class. There are certain sodium and potassium pumps in the cell membrane. Okay? For the proper balance, these salts are extremely important. The excess sodium is linked to adverse health outcomes, including increased blood pressure. That's why you have to drink water again and again to flush out extra salt, extra toxins from your body. The second use in the human body is salt of calcium are present in bones. We know that हमने बहुत टीवी पे एड्स भी देखी हैं जिसके अंदर हम मिल्क की एड देखते हैं, ठीक है. तो they are very much that thing is very milk is very much important for our bones because it has calcium in it, and the salts of calcium are also very important similarly for our bones, and they are responsible for the strength of the bones. They are also very much important for preventing heart attacks. Medicines में भी इसके salts को use किया जाता है. Furthermore, plaster of Paris, किस किस की कोई बॉडी का बोन टूटी है उसके लिए भी, उसको भी पता होगा, दे यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको अपनी प्लेस में रखने के लिए, उस लिम्ब को, उस ब्रोकन बोन को अपनी प्लेस में रखने के लिए दे यूज द प्लास्टर, ठीक है, जिसका ये फॉर्मूला होता है CaSO4. इट इज अगेन बेसिकली अ सॉल्ट, calcium sulfate with a half molecule of water is used for broken limbs. All right. Then we have option C, and then we have basically the point C. Potash alum is used to coagulate the blood coming out of a wound. Okay. It is also used for the purification of water. If you see this dialog box, which is a white dialog box right behind, right after this point A, potassium alum or potash alum is basically having the formula of this formula. It is the double sulfate molecule has been attached with potassium and aluminium. This is the formula of potash alum. Potash alum is basically used to coagulate the blood. उसको blood को जमने के लिए, जो जख्म से हमारे ब्लड निकल रहा होता है उसको, उसकी कोगुलेशन के लिए उसको, उसके ऊपर थोड़े से आपने देखा होगा ब्लड के बाद, ब्लड निकलने के बाद थोड़ा ब्राउन कलर की चीज ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, ठीक है, वो हमारे ब्लड की हेल्प की वजह से बनती है. एंड पोटैश एलम इज आल्सो वेरी हेल्पफुल, व्हिच इज used to coagulate the blood coming out of a wound. It is also used for the purification of water. It has this formula of calcium and aluminium are joined with the two sulfate molecules. Then we have salts of iodines are needed for the proper functioning of thyroid glands. They're also used for the treatment of goiter. ठीक है, iodine के salts जो हैं, this is a very common use. Iodine के salts जो हैं ये goiter को, goiter is basically this kind of condition. If you see the slide, basically ये goiter सा बन जाता है, एक anomaly सी हो जाती है due to the in the thyroid gland. There are the glands that are present in our throat. इसमें कोई एनॉमली हो जाती है, इस कंडीशन को गोइटर कहते हैं, लैक ऑफ आयोडीन की वजह से. सो सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गोइटर. ऑलराइट, so we are moving towards the uses of salts in our daily life. We know that salt is used for seasoning our food. हमारे खाने का टेस्ट अच्छा करने के लिए it is used. It is also used as preservative for fish and pickles. अचार के लिए plus fish को preserve करने के लिए भी use होता है. There are some simple uses that have been listed. It is used
बेकिंग सोडा की हमें पता है इंपॉर्टेंस का, इट इज यूज इन बेकिंग. वॉशिंग सोडा की हमें इंपॉर्टेंस का पता है, इट इज यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स. एंड देन वी हैव सोडियम पोटेशियम tartrate which is used as a laxative. If you have constipation or you have problem in excreting your feces, then you take sodium potassium tartrate, it is used as a laxative. ठीक है, जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, यू टेक अ laxative. ठीक है, आप जाते हो medical stores पर and you ask for a laxative, any syrup that has laxative in it. So sodium potassium tartrate is also used as a laxative. Okay, so now we are moving towards the uses of salts in the industries. Laxative is basically a chemical, a substance that is used to, uh, aid the excretion and increase the bowel movement. They are used to treat and prevent constipation. All right. There are certain uses of salts in the industries. There are also sodium chloride is basically used for the manufacturing of different things. Manufacturing of chlorine, इसके अंदर से chlorine निकल जाती है. It is used for the manufacturing of acid, which is HCl. It is used for the manufacturing of caustic soda, of washing soda, ठीक है, and sodium hydrogen carbonate. Now we are moving towards the point B. Sodium carbonate is used for softening hard water and the manufacture of glass and soap. If you remember, we have studied in the previous class about hard and soft water. Okay, how hard water is important and what are the difference between hard and soft water. Soft water के अंदर there are more bubbles, इसके की identification होती है, whereas hard water के अंदर there are less amount of bubbles. Furthermore, हार्ड वाटर के अंदर कुछ जब रेन होती है या माउंटेन्स के ऊपर पानी गिरता है, तो माउंटेन्स के ऊपर सॉल्ट्स होती हैं, कुछ ऐसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं जो कि पानी के साथ बहते चले जाते हैं रिवर के अंदर, और फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं, इंडस्ट्रीज में वो यूज होता है, राइट. उन सॉल्ट्स की वजह से पानी को कहते हैं दिस इज द हार्ड वाटर. एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ हार्डनेस, वन इज टेम्परेरी हार्डनेस एंड वन इज परमानेंट हार्डनेस. अगर आपने केटल कभी यूज की हो पानी गर्म करने के लिए, यू सी कि आफ्टर सम टाइम उस केटल की पाइप्स जो होती हैं अंदर, या केटल की जो बाउंड्री होती है, उसके अंदर कुछ वाइट वाइट सी चीज जमना शुरू हो जाती है. दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हार्ड वाटर. वो बेसिकली सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, जो कि बॉइलिंग से रिमूव कर दिए जाते हैं. ठीक है, जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉइलिंग. इसलिए हमें वाइट मटेरियल नजर आता है केटल्स के वॉल्स के साथ और केटल की पाइप्स के साथ. केटल जिसके अंदर पानी गर्म किया जाता है, राइट. सो बेसिकली it is also used, sodium carbonate is used for softening hard water and for the manufacture of glass and soap. Potassium nitrate is used in the preparation of gunpowder and fireworks. It is also used as a fertilizer. इसको as a fertilizer use किया जाता है. Potassium nitrate के अंदर we have potassium, we have nitrogen. They are very much important for the growth and development of the plants. So farmers basically use this chemical and spread it out in the form so that plants can have enough sodium and potassium to absorb, and then they have the proper growth and proper development. Then potassium, जिसका हम formula पढ़ चुके हैं, it has calcium in it, it has potassium in it, it has aluminium in it, it has sulfur, it has oxygen. It is used for the purification of water, in dyeing clothes, and for tanning hides. Copper sulfate is also used as a fungicide. जिस तरीके से पेस्टिसाइड्स होते हैं, उस तरीके से फंगस को किल करने के लिए फंगिसाइड्स होते हैं. इन कलीको प्रिंटिंग, which is the process of imprinting on textile fabrics patterns of one or more colors on a white or colored ground. ठीक है, व्हाइट या कलर बेस के ऊपर क्लिको प्रिंटिंग होती है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट को यूज किया जाता है. एंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर. इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. इसको गोल्ड की प्यूरिफिकेशन के लिए, दूसरी चीज़ों की डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज़ किया जाता है. एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर जमाने के लिए, को उसको इम्पोज करने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज़ किया जाता है. वी विल बी स्टडिंग दिस प्रोसीजर लेटर इन हायर क्लासेस इन डिटेल. So right now you just remember electroplating is the process of plating one metal onto another by the process of hydrolysis.
दोनों मेटल्स को डिप किया जाता है पानी के अंदर और वायर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन यू स्टार्ट द प्रोसेस, व्हेन यू स्टार्ट द बैटरी, ठीक है, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, तो एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल के ऊपर डिकम्पोज होता है और कभी वी ऑब्जर्व द एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड भी उस पूरे रिएक्शन में से निकलती है और हाइड्रोजन गैस, इट इज मोस्टली यूज फॉर द डेकोरेटिव पर्पसेस। All right, so what's the time? We have plenty of time right now. So if you go towards pH scale, we have been studying about pH scale since the start of this chapter. All right, दो जो pH scale होता है, basically there is this sort of scale, ठीक है, इस तरीके का scale होता है. If you see on the slide, आपकी book में भी बना हुआ है, ठीक है. pH, this is pH scale. It goes from 1 to 14, ठीक है. We have red, we have pink, orange, beige, yellow, lime green, green, dark green, turquoise, pale blue, blue, dark blue, violet and purple, ठीक है. ये सारे कलर्स इस तरह का एक चार्ट सा बना होता है, इस तरह का एक पीएच स्केल सा बना होता है. एट दिस पॉइंट, यहाँ पे अगर आपका कोई सोल्यूशन, आप अपने लिटमस पेपर को डिप करते हो, ठीक है, अपने सोल्यूशन के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई रिएक्शन कंडक्ट किया, उस रिएक्शन के अंदर आपको आपका एक एक्वस सोल्यूशन मिला, ठीक हो गया. एक एक्वस सोल्यूशन मिला, आपने उसके अंदर अपने लिटमस पेपर को डिप किया, ठीक है. लिटमस पेपर को डिप करने के बाद एक स्पेसिफिक सा कलर आ गया आपकी लिटमस पेपर के ऊपर. उस लिटमस पेपर को फिर आप इस पीएच स्केल के साथ टैली करते हो. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. ऑलराइट, उस लिटमस पेपर को फिर आप डिप करते हो सॉल्यूशन के अंदर, और वो जो आपके पास कलर होता है आप मैच करते हो पीएच स्केल के साथ, ठीक है. अगर तो उसका कलर रेड आया तो इसका मतलब है द सॉल्यूशन इज वेरी एसिडिक फ्रॉम द पीएच स्केल. अगर थोड़ा सा पिंक हुआ तो उसका मतलब है कि वो स्लाइटली एसिडिक है. फिर उसके बाद ऑरेंज आता है तो वो ओवरकम एसिडिक होता रहता है. इसी तरीके से डिफरेंट चीजें, इफ डिफरेंट कलर्स ऑब्टेन होते हैं जिसको हम मैच करते हैं पीएच स्केल के साथ. न्यूट्रल पीएच किसी चीज की हो, इसका मतलब है कि अगर पानी ना एसिडिक है ना बेसिक है और न्यूट्रल है, तो उसकी पीएच 7 तक होती है, ठीक है. जो कि हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने वाटर की, ठीक है. इफ यू वांट टू टेस्ट समथिंग वेरी न्यूट्रल, नॉट acid, नॉट बेसिक, then go and drink water and you will feel how the neutral solution tastes like, ठीक है. अगर उस लिटमस पेपर का कलर ग्रीन आता है तो हम कहते हैं कि जो सोल्यूशन है दैट इज न्यूट्रल, ठीक है. लेकिन अगर थोड़ा सा कलर चेंज होता रहता है और हमारे पास इवेंचुअली पर्पल कलर आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है. 1 to 5 and 6, ठीक है, हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ है. ऑलराइट, 1 इट्स वेरी एसिडिक, देन 2 स्लाइड, फिर उससे कम होता है, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है. थर्ड पे आके और डिक्रीज हो गई, फोर्थ पे और डिक्रीज, 5 पे और डिक्रीज, 6 पे बहुत ही कम एसिडिक है वो सोल्यूशन जो हमने बनाया है. फिर अगर बिल्कुल ग्रीन आता है तो इसका मतलब है ये अब न्यूट्रल है, ठीक है. अगर डार्क ग्रीन आता है तो हम कहते हैं कि स्लाइटली बेसिक है, थोड़ा सा ज्यादा इसके अंदर बेसिसिटी इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा है. देन वी हैव टर्कोइज. इस तरीके से स्ट्रेंथ इंक्रीज करती जा रही है और एट द एंड पर्पल पे बहुत ही ज्यादा वो बेसिक हो जाता है. तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी एसिडिक, ठीक है. 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि वेरी एसिडिक है, 14 तक जाते हैं जो कि वेरी बेसिक है, और दरमियान में हमारे पास एक न्यूट्रल सी अमाउंट होती है. The pH scale goes from 0 to 14. 0 is the most acidic one and 14 is the most basic one or the alkaline one. So if if a solution has a low pH, then it is very acidic. And if it has a very high pH, then it is said to be very basic. और प्लेन वाटर, द वाटर विच वी आर यूजिंग, अगर उसके अंदर वो प्योर है बिल्कुल, तो इसकी जो पीएच होगी इट विल बी क्लोज टू 7 and 8, ठीक है. इन द मिडिल स्केल उसकी पीएच होगी 7,
ठीक है. Then the color we have already discussed, so I will be just reading the slide. The pH scale runs from 0 to 14 with each number assigned a different color. At the bottom of the scale sits red, this one, the top bottom, which represents the most acidic, and dark blue, which is slightly purple or or dark bluish B, and it represents 14 and alkalinity. In the middle zone, we have pH 7, which is that of our water. pH of water. अब मुझे बताएं, we have been studying about acids, we have been studying about bases, ठीक है. जब एसिड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है, और ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है. बेसिकली हम अगर एसिड और बेस की डेफिनेशन देखें, व्हेन एसिड इज बीइंग डिसॉल्व्ड इनटू वाटर, व्हेन इट इज बीइंग सॉल्युबलाइज्ड इनटू वाटर, ठीक है, जब इसको पानी में डिसॉल्व किया जाता है या सॉल्युबलाइज किया जाता है, तो इवेंचुअली हमें अगर हाइड्रोजन आयंस ऑब्टेन हो, तो हम कहते हैं द सॉल्यूशन इज क्वाइट एसिडिक. एंड इफ वी आर गेटिंग हाइड्रोक्साइड आयंस, वी से दैट the solution is quite basic. So there are two things, hydrogen ions and hydroxide ions. If you see the water molecule, water has hydrogen ions in it as well as the hydroxide ions in it. So वाटर की अगर हम वाटर को हम देखें या वाटर की पीएच को देखेंगे, वाटर के अंदर, वाटर को अगर टेस्ट किया जाए तो वाटर के अंदर इक्वल अमाउंट्स होती हैं हाइड्रोजन आयंस की भी और हाइड्रोक्साइड आयंस की. विद दैट इज व्हाई द सॉल्यूशन इज सेड टू बी क्वाइट दिस न्यूट्रल. ठीक है. Same amounts are present of hydrogen ions and same amounts are present of the hydroxide, and both of their concentrations are equal in case of water. This is the very important thing which you have to listen. Okay, हम एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं, by the on the basis of the definition, and there are certain other properties, but first we have to consider the definition. If you are dissolving something into the into water or into the liquid solution and you are getting hydrogen ions from it, ठीक है, so you will be getting, if you, and you also test it from the litmus paper, ठीक है, और भी काफी चीजें होती है जिससे आप इंडिकेट कर सकते हो कि if you are getting hydrogen ions or the hydroxide ions. If suppose you are getting hydrogen ions, then we will say that the solution is acidic, and we will say that it has more concentration of hydrogen ions in it. On the other hand, if you see a basic solution, अगर आप बेस को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि बेसिक सॉल्यूशन के अंदर यू हैव, by the definition you say that we are getting a more hydroxide ions from it, and this indicates that this is a basic solution. And you also test it from the litmus paper and other indicators, right? And if the concentration of hydroxide ions is great, then it is a very strong base. ठीक है, ये इसका कलर होगा तकरीबन वायलेट पर्पलिश. ठीक है, जब इसको लिटमस पेपर के अंदर, लिटमस पेपर को इसके अंदर डिप किया जाएगा, इट विल बी हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस. अगर थोड़ी सी लो कंसंट्रेशन होगी तो कलर भी चेंज होता जाएगा और उसकी बेसिसिटी भी डिक्रीज होती जाएगी. इसी तरीके से एसिड्स के साथ होता है. बट इन केस ऑफ वाटर, जब पानी के अंदर हम लिटमस को डिप करें तो इट विल बी ऑफ ग्रीन कलर. लिटमस पेपर के ऊपर ग्रीन सी अपीयरेंस आ जाएगी, व्हिच इंडिकेट्स दैट इट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. इसके अंदर जितने ही हाइड्रोजन आयंस हैं उतने ही इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट है. ऑलराइट, hence pH scale is used to measure the strength of an acid or base. अगर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होंगे, we will be getting red and pinkish color. ठीक है, जैसे जैसे स्ट्रेंथ एसिड की डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे कलर भी इस तरीके से चेंज होता जाएगा. न्यूट्रल सॉल्यूशन आ गया, अगर हाइड्रोजन आयंस की जो क्वांटिटी है वो हाइड्रोक्साइड आयंस के इक्वल हो गई, देन वी आर गेटिंग द न्यूट्रल सॉल्यूशन. लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड आयंस की अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी, आई विल बी टेकिंग एन ओरल टेस्ट ऑफ दिस सेक्शन टुमारो और द नेक्स्ट क्लास, सॉरी. और जिस तरीके से अगर इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी, हाइड्रोक्साइड आयंस की अमाउंट कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी और एट द एंड हमें वॉयलेट और पर्पलिश कलर मिलेगा, so which indicate that it is a very strong base and it has a huge amount of hydroxide ions. So it's 8:30 now, and I think we should end the lecture. All right, so
There are no questions which I cannot see in the chat box. Teacher Paiza, if you can hear me. All right.